Senior representative of the sports ministry. In fact, they will be meeting the minister at 10 o'clock tonight is what we've been told. The ministry has written to the federation asking for an explanation. There's also going to be an emergency meeting of the federation itself this coming Sunday. The moot question is this: can this be resolved without Brij Bhushan Singh stepping down? Has his continuance become almost untenable now? And today, the players said it's not just a question of his resignation. What they want is the outright dissolution of the federation itself. They want a whole new management to run the Wrestling Federation of India. But first, the story. For the second straight day, India's most decorated wrestlers landed up at Delhi's Jantar Mantar to protest against Wrestling Federation Chief Brij Bhushan Singh. इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। आप यहाँ पे खड़े हो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं। They are demanding action against Singh and several coaches for allegedly sexually harassing and mentally torturing female wrestlers over the years. दुख की बात है कि पहलवानों को मैच छोड़ के, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है। हमारे साथ इतना कुछ हुआ है सीनियर में आने के बाद, तो जो सीनियर के हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा, आप वो सोच सकते हैं। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन को एक Tokyo Olympics bronze medalist Bajrang Punia accused Singh of running the federation like a dictator. नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर सके। Fellow wrestler Babita Phogat came on behalf of the government and assured support to the wrestlers. मैंने कहा है, मैंने कह दिया है, जो भी खिलाड़ी चाहते हैं कोशिश करेंगे वैसा। मैम, क्योंकि एक ही डिमांड है खिलाड़ियों की। मैम, आप भी खिलाड़ी हैं और बड़े गंभीर आरोप लगे हैं ब्रिज भूषण जी पे, और आप सरकार की तरफ से लगे हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया गया है। Soon after, the sports ministry summoned the protesting wrestlers for a meeting. इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। But the man in the center of the storm, Brij Bhushan Singh, remains defiant. कोई बिजनेसमैन खुल करके नहीं आया है, लेकिन साजिश है। ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले तक इसी कमरे में बजरंग पूनिया बैठते थे। 1 सप्ताह पहले साक्षी मलिक यहाँ बैठी थी। 10-15 दिन पहले बिनेश अपने पति के साथ बैठे थे। आज 10 दिन पहले, 7 दिन पहले कोई आरोप नहीं था, हमसे उनको कोई शिकायत नहीं थी। ये 1 हफ्ते के अंदर उनको शिकायत पैदा हुई, तो ये बिना कॉन्स्पिरेसी के नहीं है। Singh has been ruling the roost at the WFI for the last decade, but for how long can he remain unscathed? All right, we're getting breaking news right at the top of brass tacks. Sports Minister Anurag Thakur will be meeting with the protesting wrestlers tonight at 10 p.m. He's called their allegations serious and promised right action. Let's listen in to what he said a short while ago, and then I'll go across to Maria Shakil. तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है, और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। और मैं यही कह सकता हूं, खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है, और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे। Go across to Maria Shakil, our political editor. Maria, so clearly the government at the highest levels is concerned about the concerns of the wrestlers, the fact that they are actually sitting on the streets in protest. What could be a possible solution to this?
Zaka, it appears that there is a great degree of urgency that is being displayed here. In fact, Anurag Thakur was in Dharmshala. He has flown down to Delhi to look and to have this meeting with the wrestlers. Earlier today, the wrestlers had a meeting with the sports secretary. They communicated their concerns, but I think the message that is coming from the sports minister here is that we have to look for a solution, and that solution has to come much sooner. Although a notice has been given of 72 hours, which will end by tomorrow evening, to the Wrestling Association of India, WFI is a precedent, but the sense certainly within the government is that these are Olympians that they are looking at, these are women athletes that they are looking at, and the charges are very, very serious, and that is the reason why perhaps pending inquiry he may be asked to step down. That is one option, and the panel which we have been running since the morning, Zaka, the government is considering setting up a panel which will have 2 women representatives, which will essentially ensure that women can communicate better with a women secretary, and that is what is being said now. The concern and reach out that is happening here is happening right at the top of the government now. All right, we'll leave it at that. Thanks very much, Mari Shakil, for joining us. First up, before we open this up to our panelists, I want to go across to Yogeshwar Dutt, Olympic medal wrestler. योगेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा देश देख रहा है कैसे पिछले 2 दिनों से हमारे जो रेसलर्स हैं वो सड़क पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उनका मानना ये है कि सिर्फ बृजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं उनके जाने से या उनके इस्तीफा से मामला सुलझेगा नहीं। उनको ये चाहिए कि पूरा जो WFI है वो भंग किया जाए। देखिए, मेरे को ये लगता नहीं है कि बात पूरे देश की जो बॉडी है ये भंग होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड में इसका ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। हाँ, जो इनकी असली जो मांग है, जो खिलाड़ियों की जो आरोप लगाया है यौन शोषण का, उस पे सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जो चीजें हैं जो खिलाड़ी जहाँ से परेशान है उस पे काम होना चाहिए। जो इनकी दिक्कतें हैं वो है, और मेरे को लगता है कि पूरी बॉडी, पूरे देश की जो स्टेट बॉडी है वो ऐसे जी खत्म करना, ये शायद कहीं भी प्रावधान में ये चीजें नहीं लिखी है, और ज्यादा मेरे को पता नहीं, पर जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ, जो चीजें जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो पहलवानों की जो चीजें हैं कि भाई उन पे यौन शोषण हुआ है, तो उस पे सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। योगेश्वर जी, सबसे जो महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो है यौन शोषण का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ये तो क्रिमिनल है, इसके लिए कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके बाद FIR होनी चाहिए। विनेश फोगाट ने आज ये भी बोला कि कल तक तो 2-3 लड़कियां थी जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आज 5 से 6 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बाकी जगहों से 5 से 6 लड़कियां ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। तो आपको लगता है कि तुरंत इस पे FIR होनी चाहिए और पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए? इसे कानून के सभी कानून का एक कानून बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है हमारी, कि उसके दायरे में रह के हम क्या काम कर सकते हैं, कानून से बाहर रह के हम क्या काम कर सकते हैं। सरकार भी बस एक यही कर सकती है इसमें कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो जांच किसी से हो, चाहे CBI से जांच हो। पर जो हम आरोप लगाए हैं, जो अगर जब तक कुछ FIR दर्ज नहीं होगी तब तक मेरे को लगता नहीं ये चीजें होंगी, जब तक कोई सामने आके ये चीजें नहीं बोलेगा। कोई विक्टिम तो इस चीज में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अलग तो ऐसे तो बीच में कोई ऐसी बात आती है तो लोग जब तक सामने नहीं देखते, प्रोटेस्ट को नहीं देखते कि भाई ये चीजें हैं, तब तक उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let me now go across to our guest. We'll be joined in a moment by Rahul Mehra. He's the Delhi Government Counsel. He's the man who took the BCCI to court. Brij Bhushan Singh is sports journalist. Jayaprakash is Joint Secretary of the WFI and wrestler. Here in our studios, G. Rajaraman, sports commentator. Varsha Chaudhary is a wrestler as well. Let me start with Jayaprakash. आप Joint Secretary हो WFI का. I think it's got to a situation where Brij Bhushan Singh जो है वो WFI के अध्यक्ष के रूप में अभी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रेसलर्स ने बोला है मिनिमम स्टेप, बेसिक मिनिमम स्टेप जो है, दिस हैज टू बी टेकन, ही हैज टू गो। आपका क्या कहना है? क्या ब्रिज भूषण सिंह अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, अभी कोई जो आप बता रहे हैं कि भाई ये चार्ज लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया है सोशल, तो अभी तो कोई किसी ने बोला ही नहीं है कि भाई आप, दूसरे ही लोग तो बता रहे हैं कि भाई इन्होंने इस तरह से यौन शोषण किया है।
आप कोई ऐसा तो सामने नहीं आया उठ के कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, तो ये सब विनेश चीजें फोगाट ने करने जो से आज पहले ही बोला कि है, भाई, आपने सुना भी है, विनेश फोगाट ने जो बोला कि कल तक 2-3 लड़कियां ही थी, आज 5-6 लड़कियां उनके संपर्क में हैं और उनको ये मजबूरी नहीं ना की जाए कि वो पुलिस कंप्लेंट किया जाए। आपने सुना ना? देखिए एक नहीं मैंने सुना है, अब आपने सुना है, अच्छे से सुना है, पर ये बताइए कि मैं भी ओलंपियन हूं, मैं भी कोई अगर इस तरह की बात बोलूंगा कि विश्वास किया जाएगा कि एक ही दम मैं बोल दूंगा कि भाई ये हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे मेरा? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये 3-3, 4-4 जो ओलंपियन रेसलर्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़क पे बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने। क्या आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, आप वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं क्या सच मान लेंगे? क्या आप लोग सच मान रहे हो क्या इस बात को? सर जी, उसमें तो कार्रवाई होगी, पुलिस कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, वो मैं मान सकता हूं, वो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस्तीफा तो दे दें, कम से कम वो ये कह दे कि मैं पेंडिंग इंक्वायरी स्टेप डाउन कर रहा हूं, इतना तो बनता है। नहीं, वो क्यों बोल दे, ये कह दें कि भाई हाँ ये गलत, ये मैंने किया है, क्योंकि आरोप तो उनके खिलाफ है, इसलिए तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आरोप तो आपके खिलाफ नहीं है, मेरे खिलाफ नहीं है, आरोप तो उनके खिलाफ है, तो नैतिक तौर पे तो जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। क्या आरोप है? यौन शोषण की आरोप है। कौन आरोप कौन बता रहा है? करप्शन के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। ये 3-4 ओलंपियन मैं भी लेके बैठ जाऊं, मैं भी आरोप लगाने लगूं, मानेगा? क्या बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी? मतलब देश देख रहा है, सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बताइए मुझे एक ही बात। नहीं, आप थोड़ा मतलब ध्यान से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये आरोप तो नहीं, एफआईआर होनी चाहिए, कोर्ट में जानी चाहिए, ये सब ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये तो मत कहिए कि 3-4 आदमी के साथ बैठ जाओ और मैं भी बोल दूं कि क्या सच हो जाएगा। क्या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक 3-4 आदमी हैं? आपके नजरिए में वो जरा सा आदमी है, साधारण आदमी है? क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्समैन है आज, अच्छे नहीं सुनिए, आज अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मैं भी बोलता हूँ जी, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जब तक इंक्वायरी ना हो, जब तक कोई जांच ना हो, जब तक जांच करानी पड़ेगी। यही कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन जांच तभी हो पाएगी जब ब्रिजभूषण सिंह, and I want G. Radharaman, Vikrishna Swamy also to weigh in on this. There is no way you can have an independent, unbiased investigation against Brij Bhushan Singh and the coaches as long as the people who are accused of that are still sitting in positions of power. It's as simple as that. You have to step down pending inquiry. Of course, nobody is prejudging the outcome. Let the police go into the heart of the matter and come to a conclusion one way or the other. But I'm convinced that you can't have that person sitting in a position of authority and have an independent inquiry. It can't be possible. Zaka, what you're saying is right. If the Wrestling Federation of India is conducting an inquiry, then the Wrestling Federation of India president perhaps need to step aside. But if the inquiry is being done by the sports ministry or even by the police, for example, or the National Commission of Women, then maybe he can continue where he is and he's not going to influence the witnesses. I think it's important for us to understand that who is going to conduct the inquiry. The sports ministry has asked for a response from the Wrestling Federation of India. Yep. And I really believe that the wrestlers must move courts of law, they must move the police, they must move the National Commission of Women, and then perhaps we can talk about how the president needs to step aside so that there is a sense of fair play and justice that comes in when a hearing happens. No, I want to ask V. Krishnaswamy. So, one of the things that Bajrang Punia today said in his press conference is, just by this gentleman, Brij Bhushan Singh, stepping down, you are not going to rid his power or, his influence on the federation. He's just going to fill it up with a proxy. Now, they are saying the entire WFI needs to be dissolved, an entirely new management, an entirely new federation should come in its place, which does not have Brij Bhushan Singh's influence or control. Do you buy that? No, I really don't buy that. I mean, you can't say that there is just, if there is just one bad apple, you can't throw away the entire basket. I mean, you just can't get rid of that. I'm sure if India has produced some good wrestling results over the past few years, it's also because there are some good coaches, there are some good officials. I'm sure about that.
But at the same time, say a powerful person like, say, the president or the secretary of the federation would have a tremendous amount of influence. Yes. So that person, we need to make sure that person does not influence any kind of a kind of an inquiry that might be conducted, whether it is by the police, by the federation, by the ministry, by any authority. But at the same time, I also feel that the women do have a point there, that they might feel intimidated when Vinay says, "I don't know whether I'm going to be alive tomorrow after making such allegations or such Yeah. accusations against certain officials." I think she might have a point. It's not easy for a woman athlete or a Yeah. woman in this country, to be not intimidated like this, and especially if she's going to continue to practice the sport as we all hope that she does. She's a tremendous athlete. She's a medal winner for us at the Asian Games, at the Commonwealth Games, and I think it was very unfortunate that she couldn't get a medal at the Tokyo Olympics. But I surely think that she is a good So let me ask contender for Rahul Paris in Mehra this. 2024. I mean, So I think- from your example of taking the cricket associations to court, and eventually it went up to the Supreme Court. It appointed a committee of administrators. There were some reforms that were brought about in the BCCI. Many would argue that it's not enough. But be that as it may, we have seen this in so many federations: wrestling, boxing, Exactly. Table football. tennis federation. I want to That ask Rahul Mehra that it's time, and we've been talking about this for God knows more than 10 years now, Rahul. It's time to bring in professional administrations to these sports bodies. You cannot have politicians who believe in the politics of patronage and influence and so on to be running sports bodies in our country. So I think after cricket, you need to follow my litigation in all other national sports federations. And last 12 years, I've been quietly, without tom-tomming about it, fighting all these federations in courts. It does take, although I'm a lawyer, it does take a long time. But I must share with you that recently there's been a landmark judgment on 16th of August 2022 against the Indian Olympic Association, where large-scale reforms have been directed by the court, and it's not been interfered in any which way by the Supreme Court. A one-member committee as a retired judge of Supreme Court was instituted, and I'm glad that most of the reforms are in place. The next date of hearing in that is 24th of this month, so we shall see how the final judgment in that comes out. So there's going to be a widespread, large-scale reforms across the board, according to me, and it's just around the corner. Coming back to the case on hand, make no mistake about it. This is not the only federation. He's not the only boss, and this is not the only official who probably has done this. It's deep-rooted. There's completely, there is an opaqueness in the way the sports administration in India is run. There is almost favoritism by the ministry. They see the faces and they show you the rule book. If it's from my political party, be it Congress, BJP, ASP, BSP, all of them, like they say, samam mein sam nange hain, all of them are equally, to blame. And therefore, coming back to your basic point, it is the politicians who are rotting the system, and politicians need not be there, in fact should not be there, because they bring only the worst kind of political practices that they follow within the profession that they have, which is politics, into the pure domain of sports. That's one. Number two, the more important takeaway is that, there are two gross violations, and therefore it is not about asking him to step aside. It is about suspending this body, and I will tell you. All right, we've lost that link with Rahul. I'll try Page and see if we 85 can to go back to that. 87, But Varsha there is Chaudhary is also there with us. Varsha जी, ये बताइए, आपके जो colleagues हैं, आपके महिला wrestlers जो हैं, 2 दिन से सड़क पे बैठे हैं, Olympians हैं, बड़े-बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं यौन शोषण का. क्या आपको लगता है उनके आरोप सही हैं, और अगर सही हैं तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन पेंडिंग जांच जो है बृजभूषण सिंह को अपनी इस्तीफा दे देनी चाहिए? देखो सर, मैं 2015 से मैंने कुश्ती स्टार्ट की है, और आज तक मैंने देखा है उनको, और कैंप में भी ये बोले कैंप में ऐसा होता है, मैंने कैंप में भी रह के देखा है. आज तक मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा कुछ भी, और ना कभी देखा, और ना मतलब मुझे किसी ने बताया कि ऐसा कुछ भी हुआ है. और जो ब्रजभूषण सिंह सर है, वो हमें मतलब अपने बच्चों की तरह रखते हैं वहां पे, और बच्चों की तरह हमसे पूछा जाता है हर चीज
कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें किस तो चीज की जरूरत है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या लगता है इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो? ये साजिश है, इनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब तक आज से पहले क्या थे, अगर ये इनके साथ ये शोषण हुआ है, अगर ये हुआ तो 10 साल से पहले, 10 साल तक कहा था ये, नहीं, आज ही क्यों आए साजिश एकदम उठ के ये सब? किसने रचाया है, कौन कर रहा है साजिश, और किस वजह से? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी है ये आरोप ये मतलब लगाने ठीक नहीं है, और शर्म आनी चाहिए मतलब सर के ऊपर, मतलब ऐसे यौन शोषण जैसे आरोप लगाना। Okay, Mr. Radharaman, I mean, Brij Bhushan said this yesterday also. There's some big giant conspiracy, some big industrialist is backing the wrestlers and so on. I mean, whatever it is, the truth will eventually come out. But I, for the life of me, can't wrap my head around the fact as to why big name women wrestlers, Olympians, Asian Games and CWG champions have to sit on the streets of Delhi because they are being, propped up by someone or somebody is conspiring to defame Brij Bhushan Singh. I can't wrap my head around that. Well, you're not the only one, Zaka. I join you there. I really believe that the first thing they should have done was go to the police. Now, if you're not wanting to go to the police because you want to protect the women athletes, you go to the National Commission of Women. You go to the Sports Authority of India. Zaka, I know there was a cycling coach who was sacked because a female cyclist alleged that there was sexual harassment. The coach was called back and was sacked promptly by the Sports Authority of India. Similarly, a gymnastics coach was sacked because he shot films of a gymnast without her permission. Now, when these things can happen, I'm sure solutions can be found. Sitting on Janpath maybe one day was great because you drew the nation's attention. Yeah. But now you need to follow the protocol and you need to go back and start training because the Asian Games are there. And I really believe that the Indian Olympic Association should step up and support the athletes with some kind of counseling because it's important that our athletes stay mentally strong. No, I also want to know from Vikar Swami, my understanding is every time there is a camp and the allegations from the wrestlers has been that the camps are being shifted to places where this gentleman has influence, it's being shifted to Gonda and Lucknow and other places where he of course has influence and reach. When these camps happen, it's not just people from the WFI. I believe there are people from SAI, there are people perhaps even from the ministry who are part of this camp. If there were these allegations and if there were these incidents that happened with some of the women wrestlers, shouldn't any of these other authorities also have come to know of it? I totally agree with you. The camps, after all, are not decided just by the federation, but also by the ministry and, the government, because that's where the money comes from. When a camp is sanctioned, the money actually comes from the ministry. The federations, apart from cricket, they really have no money. So they need the money from the government, the grants from the government. So obviously there is a kind of a say for everybody. In that sense, I would say that everybody should know, everybody would know. But, having said that, I think, the games are close by. The athletes need to practice. But I also feel that the athletes need to be tension-free. They need to be stress-free. If there is stress of this kind that keeps on happening, I think it's not going to be easy for them to kind of compete. Rahul, because there is always one thing is favoritism, politics that's going on, conspiracy, Exactly. whatever it is, that's fine. But Rahul, the charge of sexual harassment, that is a criminal charge. That's an IPC charge. And that, Rahul Mehra, needs to be investigated by a competent law enforcement agency, a criminal investigation agency. That can't be inquired into by either SAI or by the sports ministry. It is a criminal offence that's being alleged here. Absolutely. Rahul. Totally. So I hope you can hear me this time. Yeah, I can, yeah. Am I audible? Yes. Okay, so I like to make 3 points and I hope you can just allow me to complete it. Number one, I don't agree with Raj. I humbly, and respectfully disagree that if 2 coaches have been banned, those were coaches. Let's not compare apples and oranges. Here's a powerful politician from a ruling party, 4 times member of parliament, continuous one, who's ruling the roost for last almost 12 years as the president of Wrestling Federation of India. Are you telling me that he has the same kind of powers, he has the same kind of resources in the corridors of power that a small-time coach would have? So let's not kid ourselves out here. Let's not compare apples and oranges. Number 2, why? And I completely agree with you that he not only has to step aside, but he has to be put aside if he doesn't, steps aside on his own. And the reason are twofold.
You know, look at the sports code, page 85 to 87. There is a notification, there is a directive which has been issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports on 16th of August 2010, 12 and a half years back, that within 15 days, that is 31st of August 2010, you have to have a complete mechanism, rules and procedures in writing, documented, notified, published and put on the website by every single national sports federation on prevention of sexual harassment, including having the Vishakha guidelines of an internal complaints committee and the works. Where is that mechanism? It's non-existent. Number two, there is a I think that's a fair point. That's a great point to ask. Just allow me 10 seconds. Allow me 10 seconds to complete. Minimum 25% sports persons of outstanding merit, in this case all Olympians who are sitting out there, some of them who have retired, some of them who are active, either need to be in the athlete commission or they need to be in the executive committee as mandated by courts, and the government of India has to follow it. Okay. Where are those? Both these grounds is the ground of violation, and the ministry ought to immediately de-recognize the Wrestling Federation of India for being chronic defaulters for 12 and a half years. Let me ask suspend them of and the then WFI. जयप्रकाश जी, 2010 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चाहे वो फेडरेशन हो, इवन कॉर्पोरेट कंपनीज में विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी होना चाहिए. वो क्या WFI में था? उस कमिटी क्या फंक्शन कर रही है? उनके मेंबर्स हैं? क्या ये रेसलर्स जो आके आरोप लगा रहे हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं? उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूं और साक्षी मलिक भी मेंबर है. एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी है आपके फेडरेशन के अंदर? जी हमारे यहाँ है, बनी हुई है. ओके. उसमें साक्षी मलिक भी है, मैं ओलंपियन जयप्रकाश भी हूं और कई और 3 और नाम हैं. BN परसूद उसके चेयरमैन है. मैं कोऑर्डिनेटर हूं, कोऑर्डिनेटर. जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के सामने ये आरोप पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है? नहीं आया हमारे पास. क्यों नहीं आया ये वजह पता नहीं. और अभी जो 24 घंटे के पहले इन्होंने ये आरोप लगाया है, इस कमेटी ने कुछ किया उसके बारे में? क्या करने की जिम्मेदारी नहीं है आपके पास? कौन से अरे आप ही ने तो कहा अभी कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के अंग हो आप ही ने तो बोला अभी. हाँ, तो अंग के पास जब आप लोग ये आएंगे, कुछ हमारे को देंगे, लिख के देंगे, कोई एप्लीकेशन देंगे, तभी तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे. पूरे मीडिया में चल रहा है, पूरे देश के सामने ये आरोप लगे हैं और आप रिटर्न कंप्लेंट के लिए वेट कर रहे हैं, शिकायत के लिए वेट कर रहे हैं आप. सर आप तो कुछ भी कह सकते हो, आप तो आजाद हो, लेकिन हमारे पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए. कोई तो होना चाहिए. प्रूफ तो दूसरी बात है. प्रूफ तो जांच के बाद होगा या नहीं होगा, लेकिन कंप्लेन तो कर सकते हैं. कंप्लेन तो आप रजिस्टर कर सकते हो. सर, पूरे देश और दुनिया के सामने उन्होंने आरोप लगाया है और इस कमेटी 24 घंटे से कुछ कर नहीं रही है. सर आप ये बताइए, कंप्लेंट वो लोग करेंगे जिनके जो हमारे पास कि भाई इस तरह से, तो हम कंप्लेंट करें उनके पास, तो उनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, तो उस पर डिसीजन होता. शिकायत आएगी शिकायत आएगी, उसके बाद ही आप जो भी कार्रवाई है करेंगे. तब तक आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? नहीं तो क्या करेंगे बताइए आप. सर, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है, आप समझ भी रहे हैं कि कितनी गंभीर है ये आरोप. ये ऐसे वैसे छोटा मोटा मामला नहीं है. ये मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ. तो अगर आप उस कमेटी के आप एक अंग हो तो आपको कुछ करना चाहिए, उस कमेटी को कुछ करना चाहिए. नहीं तो क्यों बिठाया है कमेटी? तो कमेटी से आके कोई बात होगी तभी करेंगे ना. अच्छा, हमें जाके वहां खड़े हो जब तक आपके पास मतलब फाइल लेके, पेपर लेके, कागज लेके आपके पास वो लोग नहीं आएंगे, तब तक आप भी कुछ नहीं करेंगे, आप भी बैठे रहेंगे. साक्षी मलिक जी वहां बैठी हैं जी, वो भी मेंबर हैं. आप एक बार
उनसे भी बात करिए कि भाई आपने क्यों नहीं नहीं, मैंने कल उनसे बात की, नहीं, मैंने कल उनसे बात की। ये भी बता दीजिए, आई वांट टू गो टू राहुल आफ्टर दिस, ये भी बता दीजिए जयप्रकाश जी, 24 घंटे से ये जो आरोप है ये पब्लिक डोमेन में है, पूरे देश इसको देख रहा है, टीवी पे पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में, लेकिन आपके जो कमेटी है उसके ऊपर ना कार्रवाई करेंगे ना कुछ करेंगे, आप बैठे रहेंगे जब तक शिकायत नहीं आएंगे आपके पास तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए, बगैर शिकायत के तो कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होता, थाने में भी कंप्लेंट देनी पड़ती है। Amazing. Rahul wanted to ask a question. जिसके नाम से किसके Can you just ask for two clarifications from the gentleman whom you were questioning right now? Number one, what I heard was there is a gentleman who's as a chairperson, the chairman of the committee. Is that correct? Yeah, that's what he said. There is a chairperson of the committee and there are members. So this is a completely illegal body which has been constituted, if at all there is one, because there's none on their website. Let's assume they have a body for argument purposes. The body can only be chaired by a woman, and the body must have a majority of women in that body. What I heard was there are 3 men and 1 Sakshi Malik, or four men on one side. It's a complete non-starter. It's an illegal body. Number one. Number two, there has to be, under that particular sports code, on page 86 of the code, it says that such kind of issues, if they border or if there is a criminality, and out here there is surely criminality on it, obviously a complaint has to come from these people. I'm sure sooner or later there will be a complaint. But if there is a criminality, then they have to, prima facie, the NSF's duty is to lodge a complaint, is what is written in that sports code. And the NSF obviously will not do it because of the conflict of interest, because their own unanimously elected boss is the one who is allegedly the accused. So what kind of investigation, what kind of complaint, what kind of process are we going to follow? No, on that unless and until this man is asked to step aside or forced to step aside. You should weigh in. I mean, here you have the allegations are directly against the boss of the federation. He's not a small fry, right? It's not one coach or it's not someone else. It's the boss of the federation. No matter what committee internally they have, do you think they have the powers to take on and independently and impartially investigate a complaint that's come against the boss of the federation? Zaka, I think it's now gone out of the hands of the Wrestling Federation of India. Whether they have a committee, whether they have an illegal committee, doesn't matter anymore. What matters is what the sports ministry thinks. What matters is what the National Commission of Women thinks. I think these two organizations will be critical. They will then perhaps give some kind of a direction to the sitting president of the Wrestling Federation of India to move on, so that an independent inquiry can be conducted and logical conclusion arrived at. I think it's important. As I understand, and correct me if I'm wrong, the ministry or the government does not have the powers to remove the president. Is that correct? It has to be done from within the so-called general body of the federation. Absolutely, but the ministry can move the Delhi High Court. We have seen Table Tennis Federation of India, the whole executive has been debarred by the Delhi High Court. So the ministry can obviously move the Delhi High Court and then find a solution. But this is in the case of if there's no criminal charge. In this case, there's a criminal charge. Absolutely not. Ministry has the authority under the sports code. Ministry can suspend the entire executive body. Ministry can de-recognize the entire body. And this is a fit case where the ministry ought to do this. They have done it before. All right, V. Krishnaswamy wanted to make a point. Many times before. V. Krishnaswamy. Let me tell you, the point is, I mean, we are trying to get into, kind of, nitty-gritties, small detailing, etc. The fact is that this is a very serious case. It is of sexual harassment. It is not of mismanagement. Yeah. It is not of corruption. Correct. It is sexual harassment, which is probably, the worst kind of a situation that can happen for a woman athlete or even a male athlete, I mean, this is really a terrible situation. And I think here it is not about who can do what, or do the rules allow this or not. The fact is that the ministry, the government itself should take cognizance of it and try to root this out. It is not, I think it is beyond, it's gone beyond a situation where, the rules or what is written in the law. I understand what Rahul is trying to say, about the code of conduct, etc. The fact is those are legal matters and they have a place. Okay. But here,
everything has gone so far ahead, so far above, that I think the highest authorities need to step in and kind of take some action. जयप्रकाश जी, ये मामला इतना गंभीर है और इतना आगे बढ़ चुका है कि आज बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बगैर उसके तो ये मामला सुलझेगा ही नहीं। वो बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे और कितने दिन देश ये देखता रह जाएगा। सर हमारी एजीएम मीटिंग है 22 तारीख को। अच्छा, तो जो भी निर्णय होगा उसी में होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा? जी, उसमें अब वो कुछ भी हो सकता है, पर जो हमारी को बोला गया है, जो हमारे पास खबर है कि हमें वहां जाना है उस मीटिंग में। नहीं तो तब तक रेसलर्स बैठे रहेंगे सड़क पे। चाहिए क्यों हो रहा है? नहीं, तो आप जब तक आप लोग की मीटिंग नहीं होगी, रेसलर्स को बैठे रहना पड़ेगा सड़क पे। नहीं, क्यों बैठे रहेंगे रेसलर? अपना जो बताया जाए, जो उनसे वादा किया जाए, वो पूरा होगा। नहीं, वादा किसी ने अभी तक किया नहीं है। खेल मंत्री जी से नहीं, किसने वादा किया? किसी ने अभी तक कुछ वादा नहीं किया है। और ये वादा करने का नौबत क्यों हुआ है उनको? सर एक बात बताइए, अगर सर कोई जी भी अगर कोई परेशानी थी तो क्या फेडरेशन को नहीं बता सकते थे? पहले नहीं बता सकते? फेडरेशन के बॉस के खिलाफ है उनकी शिकायत। आप ये बताइए, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? बॉस के फेडरेशन जो चलाता है उसी के ऊपर है आरोप। ठीक है, हमें भी पता है। अरे बॉस के खिलाफ है तो ये आज ही क्यों बताई? 2-4 दिन में ही क्यों बताई जा रही है? 7 दिन पहले तो सब एक साथ थे, ये लोग सारे बधाइयां दे रहे थे बर्थडे पार्टी की। नहीं, ये हो गया अभी क्यों आया, पिछले हफ्ते क्यों नहीं आया, पिछले महीने क्यों नहीं आया? ये तो मूल बात नहीं है ना। मूल बात ये है कि अभी आया है, इसके बारे में फेडरेशन क्या कर रही है? कुछ करेगी या बैठे रहेगी? देखिए फेडरेशन तो कर रही है। क्या कर रही है बताइए? नहीं, गिनिए ना, हमारे दर्शकों को गिनिए कि क्या क्या किया आपने पिछले 24 घंटे में। 3 ऐसे कार्रवाई बता दीजिए जो आपने किया है। इन्होंने फेडरेशन से जो ये 2 चीजें मांगी, सुनिए जी। ये मांगते हैं कि भाई हम लोग जो है ना तो ट्रायल देंगे ना नेशनल खेलेंगे। क्या जो नेशनल खेलने लड़के आते हैं उनको टाइम नहीं दिया जाए? उनको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सबसे बड़ा जो आरोप है यौन शोषण का, इसके बारे में 24 घंटा हो गया, फेडरेशन ने क्या किया है? आप गिन के बता दीजिए हमें। नहीं सर, मैं क्या बता सकता हूं। फेडरेशन ने जो अपनी एजीएम मीटिंग बुला ली है, वो अभी इससे पहले एकदम तो इकट्ठे होकर एकदम तो सब लोग आ नहीं सकते। तो मतलब 5 दिन के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, रेसलर जो है सड़क पे बैठा रहेगा, देश ये पूरा तमाशा देखता रह जाएगा, और आप लोग मेहमान जो मतलब जो चलाते हैं रेसलिंग फेडरेशन को, आप कुछ नहीं करेंगे। आप संडे की इंतजार करेंगे जब आपका एजीएम होगा। जो हमारी मीटिंग होगी सर, उसी में तो हम कुछ कर पाएंगे, बता पाएंगे आपको। मीटिंग कल भी बुला सकते हैं आप, मीटिंग तो आज भी बुला सकते हैं आप। ये रेसलिंग फेडरेशन की सबसे बड़ी समस्या है। ये पिछले 10, 15, 20 साल में इससे बड़ा समस्या आया है फेडरेशन के ऊपर? नहीं आया है ना। ये सर जनरल सेक्रेटरी का काम है सर, मेरा नहीं है ये काम बुलाना। नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बता रहा हूं। मैं, आप फेडरेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हो इस पैनल में, उसके तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, फेडरेशन की जिम्मेदारी है। जो फेडरेशन चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, मैं तो वैसे उनसे भी, वो भी मेरे छोटे भाई लगा लो, बच्चे लगा लो, उनसे भी यही कहूंगा कि भाई आप अपना थोड़ा इंतजार करिए। जो भी हो रहा है फैसला जो ठीक होगा, जो सही होगा, वो सामने आ जाएगा। All right, we'll leave it at that. Like I said, this is a grave set of allegations. As V. Krishnaswamy said, it's not just financial misconduct or corruption or mismanagement. Those are matters that can be dealt with. But sexual harassment is a criminal offence. It's not a light charge. I mean, the minimum for that is 7 years rigorous imprisonment. If that's not investigated forthwith, pronto, I really don't see this controversy coming to an end anytime soon. I completely believe that till that inquiry is complete, till pending investigation, Brij Bhushan Singh has to step down. Maybe these allegations will not be true. Maybe that investigation will come to that conclusion. But till such time, for an independent, impartial and fair inquiry, it is just moral responsibility more than anything else
that he stepped down pending that inquiry. We'll see how this story plays out. Meanwhile, let's shift focus now to our other big story, and this is the BBC documentary which was released on the 2002 Gujarat riots, examining the role of then Chief Minister Narendra Modi. The two-part series is called India, the Modi Question. It's now come under question for showing Modi as part of the riots or conspiring as part of the riots. This is by virtue of a UK report that was sent by UK diplomats who were stationed in India at that time. Remember, the topmost court of India, the Supreme Court, had given a clean chit to Prime Minister Modi in the 2002 Gujarat riots case. Today, the MEA officially commented about this documentary, slamming it and calling it a propaganda piece designed to push a discredited narrative. Over in the UK, in London, in the House of Commons, UK Prime Minister Rishi Sunak shut down a Pakistan-origin UK MP who tried to link Modi to the riots and said that he doesn't agree with such characterization. So, the question that we're asking, has the Western media's bias once again been exposed? First the story, and then we'll go across to our guest. This is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. He was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. I'm not sure I agree at all with the characterisation that the Honourable Gentleman has put forward. All right, I want to go across first to diplomat Prabhu Dayal, who is joining us on the conversation. Lord Rami Ranger will also be joining us as the chairman of the British Sikh Association and member of the House of Lords. Prabhu Dayal, let me start with you first. The UK Prime Minister has said that he doesn't agree with the characterization of Prime Minister Modi as this BBC documentary does. You have the MEA, which has come out today and said that this is a biased documentary, it's a piece of propaganda, and that they would not like to give it any more publicity than it has already got. What is your first reaction? Because it seems like almost like a trope that's been playing for the last 20 years about the Western media, the BBC and other Western media, trying to paint a picture of Narendra Modi, which even the Supreme Court went into and found false. Well, Zaka, I think that there is a lot of wisdom in the old saying, let barking dogs bark. As far as I'm concerned, I would throw this BBC documentary where it belongs, that is, into the dustbin. The External Affairs Ministry has categorically stated that this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The External Affairs Ministry has also said that there is an agenda behind the documentary and that the bias, lack of objectivity, and continuing colonial mindset are blatantly visible. As far as the UK government is concerned, I go by what the British Prime Minister has said, that their government's position on this matter has been clear, long-standing, and it hasn't changed. And he has categorically also said that he does not agree at all with the characterization. Yeah. So, as I said earlier, let BBC say what it wishes to. Let barking dogs bark. No, I also have a quote that has been put out by Kamal Sibal, former Foreign Secretary, and he was Foreign Secretary at that time. He has put this out on Twitter as a bit of a clarification, if you will, and I'm going to read from it. He says, I was the FS during that period. I'm aware of the mischief of the UK mission at that time. They sent their diplomat to Gujarat and circulated a highly slanted report to EU envoys in Delhi. I was informed by a EU envoy, which then prompted me to issue a warning to missions in Delhi to not to interfere in our internal affairs. I mean, this is straight up, like the former Foreign Secretary said, interfering in the internal affairs of another country. You don't send your diplomats, India doesn't send its diplomats to find out what's going on in Leicester or find out what else is going on in the United States or wherever else. I mean, those are internal matters of those countries. Well, I think that the British government has, for a long time, been taking a role as regards India is concerned, which at times appears a little mischievous. The embassy here has been particularly noticed in this regard. But as I said earlier, I go by what the British Prime Minister has now said,
that he doesn't go by the characterization portrayed in the documentary at all. But there is no doubt foreign embassies do play a very mischievous and provocative role at times. The Pakistan embassy, of course, does it. But there are others. And as former Foreign Secretary Sri Kamil Sibbalji has said, the British were plainly being mischievous at that time by sending their diplomat to Gujarat. So this is not a one-off case, and I'm hoping that Lord Rami Ranger from the House of Lords is also joining us. The contention by the Indian government has been consistently that most Western media have a bias against either Mr. Modi or his government. The BBC's coverage of the 2002 Gujarat riots, that is being criticized for its biased portrayal of what exactly happened and the role of the leadership at that time. The Washington Post's coverage of the 2014 general election, which was accused of being against the BJP. The New York Times' coverage of the Kashmir conflict, which is accused of being one-sided and not portraying the terrorism that's being pumped in from Pakistan into India. The Guardian's coverage of the 2017 cow slaughter protests in India. The BBC's coverage of the 2019 Pulwama attack, which was accused of being biased against India. And of course, the Washington Post and the New York Times coverage of the 2019 Citizenship Amendment Act. These are instances that the government of India is saying are past instances of the Western media's bias, either against Mr. Modi or against Indians or against Hindus. Do you see merit in what the government is saying in light of this latest controversy around the BBC? Lord Rami Ranger, can you hear me? Hello, are you asking me? Yes, that question was to you, sir. Yeah. Hello. Yes, that question was to you, sir. Lord Rami Ranger. Yes, go ahead. Yeah, thank you. Thank you very much. I'm speaking to you right from the House of Lords, so you can get it straight from the House of Lords. First of all, the documentary was totally uncalled for. It was unwarranted at this time, after 20 years of all these legal scrutiny which took place against Prime Minister Modi. To bring it to this time when we are talking about free trade agreement between the two countries, and we are working toward having a deepening relationship. We have a Prime Minister of Indian origin. India is doing so well. All those things put to take into account and to come up with this documentary out of the blue, I think it's in a very bad taste, and it's to say the least. On top of that, divide and rule policy is not going to work because we now have people of Pakistani origin, Indian origin, living side by side in the United Kingdom. By stirring up religious hatred, you will damage the social cohesion in this country. Imagine if you have two large communities hating each other, how will that affect the progress of this country? We now have one country, one king. I think we have become one, and we should not be stirring up trouble. And for Pakistani Member of Parliament, Imran Hussain, to come and accuse and to make a statement that he talked with the Foreign Office and he got to know that Prime Minister is totally lie and totally incorrect. We checked with the Foreign Office. He never contacted anybody, nor did anybody say that kind of narrative which he gave. And on top of that, it is an insult to the Indian democracy, rule of law, judiciary, and the police that we do not know how to protect minorities. People in India have been living side by side for centuries. We have a very diverse population in India, many culture, many religion. Equality for all is enshrined in the Constitution. Diversity is not only accepted, respected, but also protected through laws. I'm completely out of time, so I want to thank Lord Ranger as well as Prabhu Dayal for joining us. I will say that the final word rests with the Supreme Court of India, which clearly in its verdict last year clearly said that there was nothing that they found after years and years of inquiry, including from the Supreme Court appointed SIT, to show that there was any conspiracy at the highest levels of the leadership of that state at that time to show this was any kind of organized, conspired, anti-Muslim pogrom or riot, as it were. This is what the Supreme Court said, and I guess we'll leave that as the last word. We'll take a quick break here. When we come back right on the other side, we'll have special live visuals coming in from Antilia in Mumbai. It's the Gol Dhana ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant. That's right on the other side.
पूरी टीम होती है, वो इसीलिए बैठता है, इनके खाने पाने की व्यवस्था देखता है, इनकी सारी व्यवस्था को देखता है। तो क्या कोई एप्लीकेशन है? आज भूषण जी उन्होंने ये बात बोली है कि वो नाम जो है वो साझा करेंगी। आज तक कोई एप्लीकेशन है? आज तक जब भी हुआ हो तो सबसे पहले जो साई का अधिकारी बैठता है वहां पर, कम से कम उसको या खेल मंत्रालय को या साई को, मान लीजिए कोच के खिलाफ है तो वो मुझको मिलना चाहिए। तो क्या कोई एप्लीकेशन है? कोई एप्लीकेशन नहीं है। भूषण जी, दो चीजें हैं, एक अगर आरोप लगता है मिसमैनेजमेंट का और एक ऐसा आरोप लगाया जाता है यौन शोषण का, बहुत गंभीर आरोप है भूषण जी ये, तो क्या आप अपने इस्तीफे से अपने पद से इस्तीफा देंगे? अरे यार कैसा पद है ये? कोई पद है? हम तो कुश्ती का काम कर रहे थे। जिस दिन खिलाड़ी चाहेंगे कि नेताजी ना काम करो, नेताजी चल देंगे अपना झोला बांध करके। क्या दिक्कत है? कोई हमारी जिद थोड़े है, ये हमारी जिद तो है, लेकिन हमें केवल ये 5-7 खिलाड़ियों को ही नहीं देखना है। इस देश के अंदर कम से कम 10,000 रेसलर हैं। लेकिन सर जो आज धरना दे रहे हैं वो ओलंपियंस हैं सर, वो देश के लिए पदक लेके आए हैं। ओलंपियन हैं, लेकिन धरना भी तो इसीलिए दे रहे हैं कि ओलंपिक बीत जाने के बाद आज तक देश में उन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है, एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और जो और खिलाड़ी हैं वो नेशनल लड़ते हैं, वजन तोड़ते हैं, तो उनको कैंप से हटा दिया जाए, इनको कैंप में रख दिया जाए। और ये देश के अंदर एक भी टूर्नामेंट नहीं लड़ेंगे। ट्रायल कराया जाए तो पहले उनकी ट्रायल करा दिया जाए, और उसके बाद में जब वो थक जाए 7 कुश्ती लड़के तो इनकी ट्रायल करा दिया जाए। मैं जो है केवल उनके लिए नहीं बैठा हूं, जब तक बैठा हूं देश के सारे खिलाड़ियों के लिए बैठा हूं। और हरियाणा के खिलाड़ियों पर मुझे गर्व है, हरियाणा की कुश्ती पर मुझे गर्व है। मैं हरियाणा के विरोध में नहीं बैठा हूं। ये एक परिवार का आंदोलन है, गिने चुने लोग हैं, इसमें कुछ झगड़ा फेडरेशन का भी है, कुछ और बातें हो सकती हैं। आपने भूषण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया था कि इस पूरी, आपने इसको पूरा एक साजिश बोला, कंस्पिरेसी बोला, और आपने ये भी बोला कि उसमें किसी बिजनेसमैन का हाथ है। कौन है वो बिजनेसमैन जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? आप ये मत कहिएगा आपके नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका सीधा नाम लेके हमला किया जा रहा है। नहीं, अभी हम कोई बिजनेसमैन खुल करके नहीं आया है, लेकिन साजिश है। ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले तक इसी कमरे में बजरंग पूनिया बैठते थे। 1 सप्ताह पहले साक्षी मलिक यहाँ बैठी थी। 10-15 दिन पहले विनेश अपने पति के साथ बैठे थे। आज 10 दिन पहले, 7 दिन पहले कोई आरोप नहीं था, हमसे उनको कोई शिकायत नहीं थी। ये 1 हफ्ते के अंदर उनको शिकायत पैदा हुई। तो ये बिना कॉन्स्पिरेसी के नहीं है, बिना उसके नहीं है। और जब मुझे मुतमईन हो जाऊंगा किसका हाथ है तो मीडिया के सामने जरूर बताऊंगा। Joining me now is Olympic bronze medalist साक्षी मलिक। साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए आप, ये मतलब दुखद दिन है, बेहद दुखद दिन है कि हमारे ओलंपिक चैंपियंस दिल्ली के सड़कों पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं। आपके 2-3 मुद्दे क्या है जो फेडरेशन से आप चाहते हो? क्योंकि बृजभूषण जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, उनका मानना ये है कि जो ट्रायल्स हैं इंटरनेशनल गेम्स के लिए, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, उसका ट्रायल्स बदला गया, इसके बदले में आप बैठे हैं और ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, ट्रायल्स का मेथड चेंज करने के एक छोटी सी चीज के लिए हमने यहाँ नहीं बैठे हैं। और रही बात, ऐसा क्या इतना चेंज कर दिया जो मुझे समझ नहीं आया, विनेश को समझ नहीं आया, बजरंग को नहीं आया, हमें इतने साल कुश्ती खेलते हो गया, तो ऐसा किसी कंट्री में नहीं है कि बैक टू बैक कंपटीशन हो रहे हैं, वजन घटाना पड़ रहा है, फिर अगला टूर्नामेंट खेल रहा है और वो नहीं खेले तो फिर उसे बैन कर दिया जा रहा है। तो ऐसा किसी भी कंट्री नहीं है। हम देश भर घूमे हैं, तो बस यही है। और भी बहुत सारे आरोप हैं जो हमने कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि स्पॉन्सरशिप नहीं जुड़ पाती है हमारे साथ, और स्पॉन्सरशिप जो जुड़ी थी एक टाटा मोटर्स, उसका पैसा अभी तक हमारे बच्चों के पास नहीं आया है। 1-1, 2-2 किश्तें दे के खत्म कर दिया है। कोई स्पॉन्सरशिप आएगी तो पहले फेडरेशन में जाएगी, फिर हमारे पास आएगी, जो कि बीच में ही रह जाती है और बीच में ही वो पैसा और सब खा लिया जाता है। तो ये आरोप है। जो सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा इल्जाम जो आपने लगाया है ब्रिजभूषण के खिलाफ और WFI के खिलाफ कि मोलेस्टेशन हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, शोषण की गई है, तो उन्होंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि ऐसे एक भी लड़की हो जो सामने आके बोले कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, तो ही सेड ना ही वो रिजाइन करेंगे, उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझे फांसी पे लटका दो। तो ऐसा आरोपी सामने आएगी और बोलेगी कि मेरे साथ ये हुआ है?
देखो, हम अभी तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल हमारे पीएम सर के पास जाएंगे और अमित शाह सर जी वो हमें बुलाएंगे और हम उनके पास जाके अपना बताएंगे। समय आने पर हम नाम भी लेंगे और सब कुछ खुल के भी बताएंगे। आपने ये भी बोला था कि जो टीम एशियन गेम्स के लिए गई थी, जो टीम ओलंपिक्स के लिए गई थी टोक्यो में हाल ही में, उनके साथ भी ऐसा हैरेसमेंट हुआ था। हमें बोलिए कि क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ वहां पे? जैसे टोक्यो ओलंपिक में विनेश ने बताया, और वो बहुत मेंटली टॉर्चर हुई है, जिसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुआ है और उसका एक सिंगलेट के लिए उसे बैन करने की 2 साल उसे बैन कर दिया गया था, उसे मारने की धमकी दी गई थी। तो एक खिलाड़ी इतना बड़े लेवल पे खेलने जा रहा है और उसे धमकियां आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गलत बात है। ये बृजभूषण जो है, उन्होंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप भी लगाए कि आपके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई बड़ा उद्योगपति है जो आपको भड़का रहे हैं ये सब चीजें बोलने के लिए और बाहर आके ऐसे सड़क में बैठने के लिए। इसके ऊपर आपका प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, कोई हमारे साथ कोई नहीं है, हम किसी पार्टी के। Welcome back. Reliance Industries Chairman and Managing Director Mukesh Ambani's son, Anant, is getting engaged to Radhika Merchant at a star-studded ceremony in Mumbai tonight. The ceremony, which is called the Goldhana, is being held at the Ambani residence Antilya. Several celebrities, including Aishwarya Rai Bachchan, Karan Johar, Akshay Kumar, Sachin Tendulkar, Sara Ali Khan, Varun Dhawan, they're all present there to join in this special occasion. Shilpa Ratnam is joining us live from Antilya in Mumbai, where the ceremony is taking place right now. Shilpa, so just give us a list of the who's who've turned up for this engagement ceremony. Well, Zaka, let me tell you that Shah Rukh Khan just arrived a few moments ago. He was accompanied by son Aryan Khan and wife Gauri Khan. Before that, we saw Sara Ali Khan, who was accompanied by designer Manish Malhotra. And as you mentioned, we also had Aishwarya Rai Bachchan along with daughter Aradhya. Actor Akshay Kumar, we had filmmakers Ayan Mukherjee, Vidhu Vinod Chopra, Karan Johar, of course, who's a very close friend of the Ambani. So it was a very glitzy list of attendees, and we're told that this drink ceremony is actually currently underway, which will be followed by a performance by Shreya Ghoshal as well. And through the day, through the evening, in fact, there have been quite a few ceremonies that have been conducted, be it the Ganesh Puja that was held, or even the sort of family dance that was performed. There was a performance put up by the Ambani family as well. My colleague Mihir Trivedi also joins me here in covering these proceedings live. Mihir, it's been a very glitzy evening, a very glamorous evening, a stark contrast to that intimate affair that they had as a roka at the Srinathji temple a few weeks ago. Absolutely, and that is the reason they had this engagement ceremony at Antilla. We can see the kind of decoration, the kind of activity that is happening inside, outside, and of course the series of stars that are entering now. One was expecting many from the Hindi film industry to make an appearance. Remember, the Ambanis are very close to members of the film fraternity and the who's who of Bollywood, and also many from the political fraternity. In fact, we saw DCM Devendra Fadnavis, also Aditya Thackeray, along with Mother Rashmi Thackeray. So many of them are very close to the Ambanis, and this is a big moment for the family, and they want to celebrate it with all the people who they know and are close to them. And these are the people we are witnessing who are making an entry inside this gate and will be part of that ring ceremony, as you were mentioning, that it is ongoing as we speak. Yeah, absolutely. They enjoy a lot of goodwill, and their close friends just happen to be the who's who. Back to you, Zaka. All right, Shilpa, Meher, thank you very much for joining us with the latest there from the engagement ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant. With that, it's a wrap of Brass Tacks. Mario Shakil joining you with News Epicenter. मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे,
लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे।